I defeated diabetes. I have successfully reversed my diabetes. Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Javihari Jaya Radha Jaya Gopi Janavallabha Yes, I defeated diabetes. I have successfully reversed my diabetes. Jaya Gopi Janavallabha Jaya Radha Madhava Girivaradhari Jaya Radha Gopi Janavallabha Jaya Yes, I defeated diabetes.
Warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. And today we'll be starting with the 23rd Shloka of the 18th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So we discussed in our previous session, Sut Goswami, he's talking about the glories of Lord Shri Krishna, the glories of understanding about Lord Shri Krishna, the glories of the pastimes of Lord Shri Krishna. And he says that the greatest Paramhansas, the greatest human beings in the human society, who are also called Paramhansas, they are the people who take pleasure in describing and glorifying Lord Shri Krishna. Shukdev Goswami, who happens to be the spiritual master of Sut Goswami, although he was a Paramhansa, completely immersed in transcendence, but he is also taking pleasure in describing the glories of Lord Shri Krishna and Srimad Bhagavatam. So now let us see what Sut Goswami talks about
more about the glories of Lord Shri Krishna and about the pastimes of Maharaj Parikshit. So text 23, shloka number 23. Aham hi prishtorya bhavadbhir achaksh atma vagamotra yavan nabha patantyatma samam patatrinas tatha samam Vishnu gatim vipaschitah. Aham hi prishtorya bhavadbhir achaksh atma vagamotra yavan nabha patantyatma samam patatrinas tatha samam Vishnu gatim vipaschitah. Translation: O Rishis, who are as powerfully pure as the sun, I shall try to describe to you the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the birds fly in the sky as far as their capacity allows, so do the learned devotees describe the Lord as far as their realization allows. Very important shloka. Sut Goswami, while narrating the pastimes or while narrating or describing the glories of Lord Shri Krishna and his pure devotees, he is giving a disclaimer here. He is giving a disclaimer. Yes, we want to glorify Lord Shri Krishna. I will glorify Lord Shri Krishna. But there is a disclaimer. What is that disclaimer? The disclaimer is, you see on your screen. Aham hi prishto aryamano bhavadbhir. Aham hi prishto. Prishto means to question. Questions. When you ask questions, that is called prishto. It comes from the dhatu prashna. So aham hi prishto aryamano. And you have asked me about whom? About Krishna. And Aryamano, and you yourself are as powerful. You are not ordinary people. You are all great sages. Aryama means a great demigod. Aryama also means Aryamanaha means sun god. So aham hi prishto Yamano bhavadbhir. You are all as powerful as the sun. Achaksh atma vagamotra yavan. Atma avagaman. Atma avagamaha. That means Atma means me, and avagamaha. Avagamaha means, gamaha means to know, and avagamaha means to the degree I know, or to the based on my realization. Yavan, till my realization allows, till I am able to know. Nabha patantyatma samam patatrinash. Nabha patanti atma samam patatrinas. Patatrinas means patat means to, you have seen leaves, patanti. Generally it is mentioned like that. So those who fly in the air. So generally patatrinas means birds. So nabha patantyatma samam. Birds can fly in the sky as far as it is allowed, or as far as their body allows. Not that birds can fly till wherever they want. No. They can fly up till a certain height. Beyond that, they cannot fly. They all have limited capacity to fly in the sky. Tatha samam Vishnu gatim vipaschitaha. Similarly, like birds, they cannot fly unlimitedly in the sky. They can fly only up till their capacity allows. Similarly, tatha samam, tatha means similarly, samam,
Vishnu gatim vipaschitaha. Vishnu gatim. Similarly, the knowledge of Vishnu can be understood only by people as far as their realization. As far as Vishnu gatim, the knowledge of Vishnu is attained by a person only till the Lord allows their realization. You see? So Krishna is unlimited, and no limited living entity can know the unlimited. Even if he may know, he may not know perfectly. You see, there are three kinds of realizations of God. I have many times described: Brahman, Paramatma, and Bhagwan. Those who are beginners, those who are just trying to understand God and they don't have the right source through which they can know, they can only reach up to Brahman realization. Brahman realization means to worship the impersonal effulgence of the Lord, or to worship the bodily rays of the Lord. They think that that is the highest, to worship the bodily rays of Krishna or the impersonal effulgence of Krishna. They are able to reach up to that level only. Why? Because they are trying to understand the Lord by speculation. And if you try to understand the Lord by your mental speculation, you can at most reach Brahman realization, or to realize that Lord, to realize or to know the effulgent rays of the Lord. Then the next level of realization is those who further advance. They can go up to Paramatma realization, to know the Lord within everyone's heart. That is called Paramatma realization. But those who are able to develop relationship with the Lord, loving relationship with the Lord, they are able to exchange their loving mellows with Krishna. The highest transcendentalists, they are called devotees. So only the learned, in fact, that's why the Lord is called as Uttama Shloka. You see, every day we read this Shloka, no? You see on your screen. What is mentioned here? On your screen, you can all see. Nashta prayasho bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttama shloke. Can you see? Krishna is called as Uttama Shloka. Why Krishna is called as Uttam Shloka? Uttam Shloka means he can only be glorified by Uttamas. Narottam. Narottam means amongst human beings the highest. So only Uttamas, those who are exalted personalities in the whole creation, the most exalted personalities, only they can describe about Krishna. Ordinary people cannot describe about Krishna. That's why here you see in this shloka, every day we read these prayers. So it is mentioned Uttama Shloke. So Krishna is called as Uttama Shloka. Right? That's why he is called as Uttam Shloka. So exactly the same thing here Suta Goswami is describing. That Krishna can be described even by pure devotees. Now we know that only Uttamas can describe about Krishna. Only the most exalted personalities of the universe can talk about or describe the glories of Lord Shri Krishna. Okay, that's fine. But then here it is mentioned, Tatha samam Vishnu gatim vipaschitaha nabha patantyatma samam patatrinas. Like the birds fly in the sky only till their body allows. Some birds will fly at 100 feet high. Some birds can fly at even 1,000 feet height. Right? So it depends on the bodily constitution of the bird. So here it is mentioned, Tatha samam, similarly, Vishnu gatim, the knowledge of Lord Vishnu or Krishna is known by people based on the realization which is given by the Lord to them. Right?
So even pure devotees can describe Krishna only up to the realization which is given to them by Lord Shri Krishna. Right? Those who are Brahman realized and Paramatma realized, they can never describe about Lord Krishna. Or even if they describe, it will be a very shallow level of understanding. But those who are even Bhagavatas, Bhagavatas means devotees. And amongst devotees, the greatest devotees are called Mahabhagavatas. So only Mahabhagavatas can describe about Lord Shri Krishna. Like here, Sut Goswami has been chosen. Why? Because he is a Mahabhagavat. So only he can describe about Krishna, but he is giving a disclaimer here. What is the disclaimer? Tatha samam Vishnu gatim vipaschitaha. Vipaschitaha means to know. To learn, learned people, they are called vipaschitaha. So those who are even learned people, even for them to describe Lord Shri Krishna is only up till the Lord allows them to describe. Just imagine. The Lord gives devotees the power to glorify Him. The Lord gives devotees the power to describe about Him. Ordinary people cannot describe about Krishna. And based on the power given by the Lord, the devotees describe about Krishna. Based on the power given by the Lord, the devotees can glorify Krishna. And that is why pure devotees are those who are empowered by Lord Krishna. They are empowered to glorify Krishna. Otherwise, even if a person tries to glorify Krishna, he will not be able to transform hearts of people. Right? So, those who are pure devotees, when they glorify Krishna, they are able to transform people. They are able to transform the hearts of people. And that happens only because of the power given by Krishna. Like, there is a very beautiful example given in the Vedic scriptures that when people offer their homage or their prayers to Mother Ganges, their offerings to Mother Ganges. So you might have seen those people who go to Mother Ganges to worship the Ganges, Mother Ganga. So they pick up water from the Ganges and pour it back inside the Ganges river only. And that is how they give their offerings to Mother Ganges. The water is of Ganges only. And the offering is done also to Mother Ganges only. Exactly like that. The devotees also describe about Krishna only. But the power to describe Krishna is given by Krishna only. So Krishna's energy is used to glorify Krishna. Krishna gives them the power to describe about him. And his given power, his given potency is used by devotees to glorify him only. Tera tujhko arpan, it is mentioned. Whatever belongs to you, my dear Lord, I am offering to you only. You have only given me. And the same thing I am offering to you. So the power to know Krishna, the power to describe Krishna is given by Krishna only. And the devotees, they use the power given by Krishna to glorify Krishna only. Now text 24 and 25. Ekada dhanurudyamya vicharan mrigayam vane mrigananugata shrantaha shudhitas trishito bhrisham jalashayam achakshanaha praviveshatamashramam dadarsha munimasinam shantam militalocanam ekada dhanurudyamya vicharan mrigayam vane mrigananugata shrantaha shudhitas trishito bhrisham
Jalashayam achakshanaha pravivesh tamashramam dadarsha munimasinam shantam militalocanam. Translation. Once upon a time, Maharaj Parikshit, while engaged in hunting in the forest with bow and arrows, became extremely fatigued, hungry, and thirsty while following the stags. While searching for a reservoir of water, he entered the hermitage of a well-known Shamik Rishi and saw the sage sitting silently with closed eyes. Now, here, what was the pretext? The prelude or the pretext to Srimad Bhagavatam is mentioned here in this shloka, in these two shlokas. So Sut Goswami is describing about what happened with Maharaj Parikshit, because of which this Bhagavatam was spoken. Like Arjun also, we see in the Bhagavad Gita, just before the battle of Kurukshetra began, this Bhagavad Gita was spoken by Krishna. But what was the prelude or what was the pretext of the Bhagavad Gita to be spoken? So Arjun went into, he underwent some he lost his mental equilibrium by seeing his, because of the affection for his family members. And that became a pretext, that became a prelude to the Bhagavad Gita. That's why Bhagavad Gita was spoken. So Lord Krishna, present within the heart of a devotee as Paramatma, he sometimes gives such situations to the devotees, because of which such great historical incidences take place. Now here you see it is mentioned Ekada, once upon a time. Ekada means once upon a time. Dhanur Udyamya. Dhanur means bows and arrows. And taking his bows and arrows, Vicharan, he was roaming around. Maharaj Parikshit was roaming around. Mrigayam Vane, in a forest filled with deers. Mriga Anugata Shantaha, and in search of Mriga means deer, stags. So in search of stags, Shudhitas Trishito Bhrisham. Shudhitas. He became, Shudhit means hungry. So he became hungry, and Shrantaha means he became very tired. He was very tired. Trishito, and not only that, he was also Trishit. He was very thirsty. He wanted to drink water. Jalashayam achakshanaha, and he was searching for reservoirs of water are all around. Praviveshatam ashramam, and in search of water, he entered into an ashram. And whose ashram? Shamik Rishi. Dadarsha Muni Masinam, where he saw a Muni, a great Rishi, sitting. Shantam Militalocanam. His eyes were closed and he was peaceful, in trance. So this Muni was meditating on the Lord. He was meditating on Krishna. And he was completely satisfied, completely peaceful. Now Maharaj Parikshit, being a Mahabhagavat, as we know, we all know that he is a Mahabhagavat. He is a pure devotee of Krishna. He is not an ordinary king, he is a saintly king. So why would he be so much affected by hunger and thirst? He must not be. He must not be affected by that. But why he is affected? I'll give you an example. Many times I have given this example. When, suppose if a person, he belongs to a particular country and there is an enemy country. Okay. Now India considers China or Pakistan as the enemy, right? So suppose someone runs away from India and goes to Pakistan. Then will it be government's responsibility to bring him back? No.
Government will say, be there only. We don't want you, isn't it? But suppose if a citizen does not run away, but if a citizen is sent by the government of India to Pakistan to negotiate, for example, the foreign minister or the prime minister or the president, if they are sent to Pakistan or China to negotiate, now if they suffer some, or if they are held captive by the army of this country, then it becomes India's responsibility, it becomes the country's responsibility to bring them back, isn't it? Similarly, those devotees, those who are working for the mission of the Lord, those who are pure devotees of Krishna, because they are working for Krishna's mission, they are not working for their own, sense gratification. They are working for the mission of the Lord. So it becomes Krishna's responsibility to bring them back. And the Lord has devises different means to bring them back to him. He is so merciful to his pure devotees that he creates circumstances. He creates such circumstances so that devotees can come back to him. And he creates such circumstances where devotees can become detached from this material world. Right? So Maharaj Parikshit, he had no reason. He was a pure devotee. Why would he be affected by material misery? A pure devotee is not affected. But still he is affected. Why? Because the Lord is in charge of his pure devotees. He takes charge. So we see here Maharaj Parikshit is being put into such situation which became a pretext, which became a prelude for the Srimad Bhagavatam to be spoken. If Arjun had not undergone these anxieties before the battle of Kurukshetra, Bhagavad Gita could not have been spoken, isn't it? Similarly, if Maharaj Parikshit didn't undergo all these situations, because this became a prelude for the Srimad Bhagavatam to be spoken to him by Shukdev Goswami. Right? Because ultimately a person has to give up all worldly attachments before a person goes back to Godhead, back to Krishna. One cannot go back to Krishna in this body. If you want to go back to Krishna, we have to give up this material body. Not only that, we have to give up material desires, we have to give up material attachment. You cannot sit on two boats. On one side, I want material things also. I want to be materially attached also. I want to love everything. Material, family, relationships, country, this, that, so many things. And simultaneously, I want to go back to Krishna also. No. You have to choose one, either material world or Krishna. You cannot choose both the things. Right? So, if a devotee becomes too much attached to material worldly possessions, then Lord creates a situation because of which he has to give it up. And we have seen this in the life of Narada Muni. All of you might remember when we were discussing about Narada Muni. Now, what was Narada Muni in his past life? He was the son of a maid servant. And this maid servant used to work, or she used to clean utensils and perform services in an ashram, which was inhabited by some pure devotees of Krishna. And Narada Muni was the son of that maid servant. Now, Narada Muni had only one attachment in this material world, and that was his mother. And Lord, because he wanted, he created a situation for Narada Muni where he lost his mother.
The only relationship that he had in this material world was taken away by Krishna. The only attachment that he had in this material world was taken away by Krishna. Now, if a person is not a devotee, he'll become bewildered. He'll start to criticize the Lord, right? He will start to, he'll become frustrated. Oh my God, what is Krishna doing with me? Why is this, Krishna is doing this with me? But a pure devotee understands the signal of Krishna. You see what Narada Muni thought at that time? All of you might remember when his mother was taken away by him, by the Lord. So what did Narada Muni think? You see what he was thinking. He thought that I had only one attachment in this material world. And now Krishna has taken this attachment back with him. So now I can focus on Krishna more. This was Narada Muni's thought, you see. Whereas a materialistic person, what will he think? Oh my God, I had only one attachment. That also you took Krishna. That also has been taken away. What was my mistake? You know, ordinary people think like that. But Narada Muni took it differently. That's why he is Narada Muni, the greatest devotee of the universe. Right? So, devotees can understand the signal of the Lord. That now it's the time to renounce. Now it's the time to give up. Right? So the Lord creates such situations in the life of some devotees, especially pure devotees, where he gives them indication. You know, he'll give some unfavorable circumstances so that the devotees can renounce the world. They can give up everything. The Lord creates such situation. And Krishna has created such situation in the life here of Maharaj Parikshit. Right? And no one becomes a loser if he gives anything to Krishna or if he renounces anything for the pleasure of Krishna. No one is a loser because of that. You know, many a times people think that, oh, nothing belongs to me, I am a loser. No. If nothing belongs to someone, that means Krishna belongs to someone. He has much better facilities to attain Krishna if nothing belongs to him. You see? So you see what is the difference between attitude of a devotee and attitude of a materialist? Right? Attitude makes a devotee. Attitude makes a devotee. What's my attitude towards life? What's my attitude towards Krishna? That is what is the difference between a devotee and a non-devotee. Devotees are personally taken care by Krishna. Krishna says in the Bhagavad Gita in the 4th chapter, Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamyaham. The degree to which a devotee surrenders, to that degree I will reciprocate. So if a devotee has surrendered 100%, it becomes Krishna's responsibility to bring him back to him. Right? If a devotee is chanting 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra, or even if a devotee is chanting Maha Mantra, or if a devotee is a devotee of the Lord, then it becomes Krishna's responsibility to bring him back. Isn't it? Krishna does not want his devotees to be here, rotting here in the material world. Rot here, take birth after birth, struggling, suffering, diseases, old age, birth, death. Krishna does not want his devotees to suffer here. So he will do everything to bring his devotees back to him. And such situations are created by Krishna for his pure devotees. Like here, we see Maharaj Parikshit. We will see now, what will happen with Maharaj Parikshit. Such unfavorable situations are created by the Lord to give the devotees an indication that now it's time to wind up. Now it's time to wind up. Pack up.
Come back to me. Right? So that's what is happening here at Maharaj Parikshit. And that's why he became a medium for the Srimad Bhagavatam to be spoken. You see, simultaneously both things are happening. Maharaj Parikshit has been, a circumstance has been created for Maharaj Parikshit to go back to Godhead. And simultaneously, Srimad Bhagavatam also has been spoken. You see, both the things are happening simultaneously here. So if Maharaj Parikshit would not have been fatigued, hungry, he would not have been roaming around in the forest looking for water, then this situation would not have arrived. And that is why here in the shloka you see the word is used, ekada, once upon a time. That means it's becoming a prelude, it's becoming a pretext for the Srimad Bhagavatam to be spoken. So now we are into the most important part of Srimad. Now we are actually into the you can say the core of Srimad Bhagavatam. Why? Because from now we will see, because as of now we are seeing the prelude to the Bhagavatam, and in the next chapter we will see when Shukdev Goswami arrives, we will actually start hearing the words of Shukdev Goswami. Very powerful, very special. So now we are actually entering into the realm of Srimad Bhagavatam, the realm of the special divine words of Shukdev Goswami. Now we'll hear from the next chapter. So that's what we see here. You can all like the video, comment on the video. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के भागवत के सत्र में प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में सूत गोस्वामी वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की लीलाओं में कितना आनंद लेते हैं, और शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, और भगवान को पाने के लिए वो कितनी सारी तपस्या और अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। अब आज हम 23वें श्लोक से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। 23वां श्लोक। अहम हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिर आचक्ष आत्मावगमोत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस् तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिर आचक्ष्व आत्मा वगमोत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस् तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। O rishis, who are as powerfully pure as the sun, I shall try to describe to you the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the birds fly in the sky as far as their capacity allows, so do the learned devotees describe the Lord as far as their realization allows. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, आप सब सूर्य के समान तेजस्वी हैं। अब मैं भगवान विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करूंगा जहां तक मेरा ज्ञान है। जिस तरह से चिड़िया आकाश में वहीं तक उड़ सकती है जहां तक उनकी क्षमता है, उसी प्रकार महान भक्त भी भगवान को उतने ही तक उनका वर्णन कर सकते हैं जहां तक भगवान उन्हें क्षमता देते हैं। अब आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अहम हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिर। पृष्टो का मतलब सवाल करना, पृष्टो का मतलब प्रश्न करना। तो महाराज सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आप सब ने मुझसे जो पूछा है, अहम हि पृष्टो अर्यमणो भवद्भिर, और आप सब जो हैं अर्यमणो, आप सब सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आचक्ष आत्मा वगमो अत्र यावान, आप सब सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और आचक्ष, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आत्म अवगम, जितना मेरी क्षमता है, अवगम मतलब जितना मैं सोच सकता हूं, जितना मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार यत्र या अत्र यावान, मैं उनका
उनके बारे में उनकी गाथा गाऊंगा। किनका? भगवान कृष्ण का। नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिणस। लेकिन जिस तरह से एक पक्षी जो है, एक चिड़िया जो है, वो आकाश में वहीं तक उड़ सकती है। नभ पतंती, नभ, नभ का मतलब आकाश, पतंती का मतलब उड़ना। आत्म समम पतत्रिणस, तो जहां एक चिड़िया को जहां तक अनुमति है, जहां तक उसकी सक्षमता है, वहीं तक उड़ सकती है वो आकाश में। उसी तरह से तथा समम, बिल्कुल उसी तरह भगवान के बारे में वर्णन भी मैं, एक महान लोग भी वहीं तक कर सकते हैं जहां तक भगवान उनको अनुमति देते हैं या सक्षमता देते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी। तो भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है, और हम सब सीमित हैं इस शरीर के द्वारा। तो जो भी सीमित है वो असीमित का क्या वर्णन करेगा? जो सीमित है वो असीमित का वर्णन उसके लिए बहुत असंभव जैसा है। तो वही सूत गोस्वामी यहां पे कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को समझने के, कई बार मैंने इसके बारे में बताया है कि भगवान को समझने के 3 तत्व होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 तरह से लोग भगवान को समझते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? जो भगवान के शरीर से जो आभा निकल रही है, जो किरण निकलती है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। जो उसको पूजते हैं उन्हें ब्रह्म, वो लोग ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। जो शुरुआती जो लोग होते हैं, जिन्हें तत्व को जानना होता है, उनके लिए। जो थोड़ा और ऊपर उठ जाते हैं, जो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, जो परमात्मा साक्षात्कार जो लोग करते हैं, तो परमात्मा का मतलब जो अपने हृदय में या जो सबके हृदय में भगवान को देख पाते हैं, उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन जो सबसे उच्चतम जो भक्त हो जाते हैं, सबसे उच्चतम जो पद्धति है वो किसकी है? शुद्ध भक्तों की, महाभागवतों की, जो भगवान के साथ संबंध स्थापित जिनका है, जिनका भगवान से प्रेम का रिश्ता है। तो ये 3 तरह से भगवान को समझा जाता है। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के गुणगान में उनको आनंद आता है, वो भगवान के भक्ति में आनंद लेते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित होता है उनका। तो भगवान चूंकि अनंत हैं, भगवान के असीमित हैं, तो उनका वर्णन भी कोई सीमित इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है, एक तरह से असंभव है। तो भगवान का गुणगान भी साधारण लोग नहीं कर सकते। भगवान का बखान करना ये साधारण मनुष्यों के धुरी में नहीं आता। आप देखिए प्रतिदिन हम सुबह क्या पढ़ते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं भागवत शुरू होने से पहले, वो क्या है? देखिए, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। भगवान का क्या नाम है? उत्तम श्लोक, ये भगवान का नाम है। यानी कि उत्तम श्लोक क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान को जो उत्तम लोग हैं, नरोत्तम जिन्हें कहते हैं, नरों में उत्तम यानी पुरुषों में, मनुष्यों में जो उत्तम है, सिर्फ वो ही भगवान का वर्णन, भगवान का बखान कर सकते हैं। भगवान का गुणगान, भगवान का वर्णन
भगवान का विस्तृत रूप में वर्णन वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो लोग उत्तम है। इसीलिए भगवान को आप देखिए अपने स्क्रीन पे, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, भगवती उत्तम श्लोक है, इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि उत्तम जो है वही उनका वर्णन कर सकते हैं। तो सूत गोस्वामी यहां पे वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अभी भगवान के बारे में बताऊंगा, आप सबको भगवान की लीलाओं का वर्णन करूंगा, लेकिन यहां पे डिस्क्लेमर डाल रहे हैं। यहां पे हम कहते हैं ना कुछ भी करते हैं तो महत्वपूर्ण सूचना, तो वो डिस्क्लेमर डाल रहे हैं, महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि मैं करूंगा लेकिन वहीं तक कर पाऊंगा जहां तक भगवान मुझे अनुमति देते हैं। तो आप देखिए, भले ही शुद्ध भक्त है, भगवान का वर्णन शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी वहीं तक कर सकते हैं जहां तक भगवान उन्हें अनुमति देते हैं या जहां तक भगवान उन्हें वो सक्षमता देते हैं। और यहां पे तुलना की जा रही है, किससे तुलना कर रहे हैं कि नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिणस्तो, जिस तरह से पक्षी आकाश में उड़ता है और वो वहीं तक उड़ पाता है जहां तक उसका शरीर उसे अनुमति देता है, जैसा उसका शरीर की बनावट है उस अनुसार। कुछ पक्षी है जो 100 फीट तक उड़ पाते हैं, कुछ 1000 फीट भी उड़ जाते हैं, कुछ उससे ऊपर भी उड़ जाते हैं। तो ये सब उसी आधार पे वो कर पाते हैं जिस आधार पे जितना उसका शरीर की क्षमता है। उसी तरह भगवान का वर्णन सिर्फ शुद्ध भक्त कर सकते हैं। तभी तो आप देखिए यहां पे सूत गोस्वामी को चुना गया है, महाभागवत। तो जो भगवान के भक्त हो, जो भगवान के साथ जिनका संबंध स्थापित होता है, वो लोग होते हैं भागवत कहते हैं उनको। और उसमें भी जो महान, जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें महाभागवत कहते हैं। तो सूत गोस्वामी महाभागवत हैं, तभी उन्हें सारे ऋषि मुनियों ने चुना है कि उनके मुख से हमें भगवान के बारे में सुनना है, क्योंकि वो महाभागवत है। तो महाभागवत होते हुए भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं भी भगवान का पूर्ण रूप में वर्णन करने की क्षमता मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जितनी मुझे अनुमति देंगे, जितनी मुझे क्षमता देंगे, उसी अनुसार मैं भगवान का वर्णन भी कर सकता हूं। तो पहली बात तो कि भगवान का वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण जो इस श्लोक में हम देख रहे हैं, दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि भगवान का वर्णन एक भक्त भी वहीं तक कर सकता है जहां तक भगवान उसे अनुमति देते हैं, जहां तक भगवान का वो साक्षात्कार कर पाता है। तो उन्हें ही कहते हैं शक्ति आवेश। भगवान कुछ भक्तों को वो शक्ति देते हैं कि वो भगवान का वर्णन कर पाते हैं, और ये शक्ति भी भगवान की ही दी हुई है और वर्णन भी भगवान का ही किया जा रहा है ना। भगवान की ही शक्ति के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही है, भगवान का ही दिया हुआ है, वो शक्ति भगवान की ही दी हुई है, लेकिन उसी शक्ति का प्रयोग करके भगवान का ही गुणगान हो रहा है। जैसे कई बार उदाहरण आता है शास्त्रों में कि जैसे गंगा माता की जो पूजा करते हैं, जो गंगा नदी में अर्घ चढ़ाते हैं, गंगा नदी में से ही अर्घ को लेते हैं और गंगा नदी में ही बहा देते हैं, है ना। तो गंगा नदी से ही लिया और उसी में दे दिया। उसी तरह से भगवान से ही शक्ति आती है और उस शक्ति का प्रयोग भी भगवान के लिए ही होता है। तो जिन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त है वही भगवान का गुणगान कर सकते हैं। और जब वो, चूंकि भगवान ने शक्ति दी है,
जब वो भगवान का बखान करते हैं, जब वो भगवान का गुणगान करते हैं, तब लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। नहीं तो अगर कोई भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, वो भगवान का बखान करेगा भी या गुणगान करेगा भी, तो उससे कोई किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो वही हम यहां पे देख रहे हैं। अब हम आते हैं 24वें और 25वें श्लोक में। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम् जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शांतं मीलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शांतः मीलितलोचनम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Once upon a time, Maharaj Parikshit, while engaged in hunting in the forest with bow and arrows, became extremely fatigued, hungry and thirsty while following the stags. While searching for a reservoir of water, he entered the hermitage of a well-known Shamik Rishi and saw the sage sitting silently with closed eyes. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, महाराज परीक्षित जब वो शिकार कर रहे थे जंगल में अपने धनुष और बाण के साथ, तो वो बहुत थक गए, प्यासे हो गए और भूखे भी हो गए हिरणों का पीछे करते हुए। और जलाशय ढूंढते हुए, जल को ढूंढते हुए वह एक आश्रम में पहुंचे, शमीक ऋषि के आश्रम में, और वहां पे उन ऋषि को ध्यान मग्न, आंख बंद करके ध्यान मग्न देखा। अब आप देखिए, तो महाराज परीक्षित के बारे में अब वर्णन हो रहा। एकदा, एकदा का मतलब एक बार की बात है। तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि धनुरुद्यम्य, अपने धनुष और बाण लेके महाराज परीक्षित क्या कर रहे थे? विचरन मृगयाम वने, तो वन था मृगों का, यानी मृग को खोज रहे थे, मृग यानी हिरण। तो इन्हें खोजते हुए वो वन में आए और मृग का शिकार करने के लिए। मृगानुगत श्रांत क्षुधिस्तस्त्रिषितो भृशम, लेकिन खोजते खोजते हिरणों को वो क्षुधिस्तस्त्रिषितो, क्षुधिस्त मतलब बहुत भूख लग गई उन्हें, भूखे हो गए, त्रिषितो और उन्हें बहुत प्यास लग गई। तो वो बहुत ही भूखे हो गए, बहुत ही प्यासे हो गए और बहुत ही त्रिषितो, बहुत ही ज्यादा वो श्रांत मतलब थक गए, बहुत ही थक भी गए, थकान हो गई उन्हें बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ फिर? जलाशयम चक्षाण, वो जलाशय ढूंढ रहे थे, वो जल का स्रोत ढूंढ रहे थे कि कहीं से भी जल मिल जाए। जब आदमी को प्यास लगती है, जब इंसान प्यासा होता है तो उसे जल की तलाश होती है। तो वो जल की तलाश में भटक रहे थे जंगल में, कहां जल मिलेगा। प्रविवेश तमाश्रमम, लेकिन जल ढूंढते ढूंढते वो एक आश्रम में पहुंच गए। ठीक है। ददर्श मुनिमासीनम, और उन्होंने ददर्श, उन्होंने देखा कि एक मुनि है, एक ऋषि है जो अपनी आसन पे बैठ के शांतम मीलित लोचनम, बहुत ही शांत मन से
मीलित लोचनम, बिल्कुल अपनी जो उनके आंखें हैं वो बंद है, वो ध्यान में मग्न थे और पूर्णतः पूर्णतः वो बिल्कुल समाधि जैसी अवस्था में थे। तो अब आप देखिए, अब अगर वास्तविक रूप में हम देखें तो महाराज परीक्षित क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वो एक राजा नहीं है, वो सिर्फ राजा नहीं है, वो क्या है, राजर्षि हैं, यानी राजा ही नहीं है, वो राजर्षि हैं, यानी ऐसे राजा हैं जो ऋषि के समान है, वो ऋषि के समान, एक संत के समान राजा है। तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि वो जल ढूंढते हुए भूखे प्यासे और थके हुए, अब एक महाभागवत, एक शुद्ध भक्त, जो एक संत की तरह, एक साधु संत के तरह के जो राजा हैं, भला वो इन चीजों से क्यों प्रभावित होंगे। एक भक्त जो भगवान का होता है, एक साधु संत जो होता है, वो तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होता है, तो वो इन चीजों से क्यों प्रभावित होगा, क्या प्रभाव होगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पूर्णतः भगवान पे आश्रित है। तो जब वो इस तरह से चीजों से प्रभावित है, तो वो कभी भी एक साधु संत के लिए ये प्रभाव कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे हो रहा है महाराज परीक्षित को। क्यों, उसका क्या कारण। अब देखिए, जब अर्जुन भी, जब भगवत गीता बोली गई तो उसका क्या कारण, अर्जुन ही कारण बना ना। अर्जुन वो कारण बना जिसकी वजह से भगवत गीता बोली गई। और कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में वो विषाद पैदा हुआ, उसके मन में ये सवाल पैदा हुए। अगर वो सवाल पैदा नहीं होते तो भगवत गीता कैसे बोली जाती, है कि नहीं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों पे बहुत, उनकी कृपा होती है और वो अपने शुद्ध भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने शुद्ध भक्तों को यहां भौतिक जगत में तड़पते हुए नहीं देखना चाहते। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए, अब जैसे जो अलग अलग देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो भारत जो है वो चाइना और पाकिस्तान को अपना शत्रु मानता है और वो भी भारत को अपना शत्रु मानते हैं। अब मान लीजिए भारत देश में से कोई नागरिक है जो भाग के पाकिस्तान चला जाए, चाइना चला जाए, तो भारत देश क्या करेगा, क्या उसे वापस बुलाएगा, नहीं, उसे बोलेगा ठीक है भैया तुम वहीं रहो, है कि नहीं। लेकिन अगर भारत देश ने अपने किसी नागरिक को चाइना या पाकिस्तान भेजा, कुछ एक दूत बना के कुछ बात करने के लिए, अगर वो भेजता है मान लीजिए, और जैसे कोई प्रधानमंत्री को भेजा या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को भेजा या आपने किसी मंत्री को भेजा, और फिर चाइना और पाकिस्तान अगर उसे बंदी बना ले, तो फिर तो युद्ध होगा ना। ये भारत के, फिर भारत का दायित्व होगा कि भारत सरकार का, कि उसे वापस लेके आए, क्योंकि इन्होंने भेजा है। उसी तरह से जो भक्त भगवान के मिशन के लिए, यानी भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए इस सृष्टि में, इस दुनिया में काम करते हैं, भगवान की इच्छा पूरी करते हैं, जो भगवान के मिशन के लिए काम करते हैं, जो भगवान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, उन भक्तों को अपने पास वापस बुलाने का दायित्व भी भगवान का ही होता है। भगवान उनको यहां नहीं छोड़ सकते, उन्हें नहीं छोड़ना चाहते।
और इसीलिए भगवान कुछ इस तरह के की अवस्था बनाते हैं, कुछ ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें इस जगत से विरक्त होना पड़ता है। वो इस जगत से जो भ्रमित भी कई बार अगर हो गए तो वो नहीं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ऐसी अवस्था बना देते हैं, ऐसा एक आवरण बना देते हैं एक शुद्ध भक्त के लिए कि उसे अपनी सारी भौतिक आसक्ति जो उसको है भौतिक चीजों से, वो उससे मुक्त होना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। अर्जुन की अवस्था भी ऐसी ही थी ना। तो उसी तरह से, क्योंकि हम इस शरीर में भगवान के पास नहीं जा सकते। अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमें ये शरीर त्यागना पड़ेगा, है ना। ये शरीर इस जड़ मिट्टी इस पृथ्वी के लिए बना हुआ है। तो अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमें ये शरीर त्यागना पड़ेगा। और ये शरीर ही नहीं, इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है हमें उस सब को त्यागना पड़ेगा। तो हम दो नाव पे सवार नहीं हो सकते कि मुझे दोनों चाहिए। या तो भगवान को चुनना पड़ेगा या फिर ये भौतिक जीवन और भौतिक वस्तुओं को चुनना पड़ेगा, शरीर को चुनना पड़ेगा या फिर तो उसी तरह से तो जैसे हमने उदाहरण देखा है नारद मुनि का, आप सबको ध्यान होगा। नारद मुनि जो थे वो अपने पिछले जन्म में क्या थे, एक दासी के पुत्र थे। और उनकी जो माता थी उनकी वो दासी थी। और कहां पे वो सेवा करती थी, वो एक आश्रम में जहां शुद्ध भक्त लोग रहते थे वहां पे वो सेवा करती थी। तो नारद मुनि उनके पुत्र थे। अब नारद मुनि को एक ही जीवन में उनका एक ही आसक्ति थी, वो थी अपनी मां से, है ना। उनकी मां के अलावा उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, उनके मां के सिवा उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। तो भगवान ने उनसे उनकी मां को छीन लिया। और वो कितने साल के थे, 5 साल के, ठीक है। तो हम अगर चाहें कि भगवान भी मिल जाए और साथ ही साथ हमें भौतिक सुख भी मिलता रहे, दोनों तो नहीं होगा। या तो भगवान मिलेंगे या तो भगवान को चुनना पड़ेगा या माया को चुनना पड़ेगा, दोनों को नहीं चुन सकते, दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। तो जब नारद मुनि के साथ ऐसा हुआ तो नारद मुनि ने क्या सोचा, उनके मन में क्या आया, हम सबको ध्यान है क्या सोचा उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में एक ही मनुष्य था जिससे मुझे आसक्ति थी और वो थे मेरी मां। अब भगवान ने जब मेरी मां को ले लिया है तो अब मैं पूर्णतः बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज से आसक्त हुए अब मैं पूर्णतः भगवान की भक्ति में लग सकता हूं। अब देखिए उन्होंने ऐसे लिया, एक शुद्ध भक्त इस तरह से लेता है चीजों को। वही अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं होता, अशुद्ध इंसान होता, तो वो कैसे लेता, अरे मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मुझसे क्यों ले लिया, एक ही तो मेरे पास। तो ये अंतर है शुद्ध भक्तों में और साधारण लोगों में। साधारण लोग इसे भगवान की कृपा के रूप में नहीं लेते। तो वही महाराज परीक्षित के साथ भी यहां हो रहा है। जैसे भगवत गीता बोली जाने का पृष्ठभूमि तैयार हुआ जब अर्जुन को विषाद आया मन में, उसी तरह भागवत बोले जाने के लिए भी ये एक पृष्ठभूमि तैयार की भगवान ने, कि महाराज परीक्षित को ऐसी अवस्था में डाला कि उन्हें
अब हम देखेंगे आगे ये होगा कि महाराज परीक्षित को ऐसी ऐसी दशा में डाला है भगवान ने कि उन्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्त भी अपने भगवान से बहुत प्रेम करता है। तो भक्त जो है वो भगवान के ये जो भगवान ये जो संकेत देते हैं, एक शुद्ध भक्त इस संकेत को समझ जाता है कि अब समय आ गया पैकअप करने का, अब समय आ गया सब अपनी सारी क्रियाओं को खत्म करने का, अब समय आ चुका है, भगवान के पास वापस जाने की तैयारी अब शुरू करनी है। तो भगवान कई बार शुद्ध भक्तों के जीवन में इस तरह का कुछ आप कह लो कुछ इस तरह का अशुभ कह लो, अशुभ भी नहीं कह सकते, कुछ इस तरह के मिजरेबल कह ले, इंग्लिश में कहते हैं इसको, मतलब कुछ दुख जैसा कुछ अवस्था बनाते हैं, कुछ अजीब सी अवस्था बना देते हैं, जिससे भक्त जो होता है वो मजबूर हो जाता है इस पूरी दुनिया को त्यागने के लिए, इस दुनिया के सारे संबंधों को त्यागने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो एक भक्त इस संकेत को समझ जाता है और उसे पता लग जाता है कि भगवान अब ये संकेत दे रहे हैं कि भाई बेटा अब तुम वापस आ जाओ मेरे पास, अब तुम्हारी इस जगत में, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त यहाँ पे तड़पे, बार बार जन्म ले, बार कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, भगवान नहीं चाहते। वो चाहते हैं मेरे पास वापस आ जाओ, आनंद है, सच्चिद आनंद स्वरूप। तो भगवान वो चाहते हैं अपने भक्तों के लिए, और इसीलिए महाराज परीक्षित के साथ भी ये जो अवस्था है ये बनाई है भगवान ने, ये एक परिपृष्ठ भूमि तैयार हुआ ताकि भागवत बोली जा सके। तो अगर महाराज परीक्षित के साथ ये नहीं हुआ होता तो अब हम आगे देखेंगे भागवत कैसे बोली जाती। तो अब हम भागवत के मुख्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां से हम सुखदेव गोस्वामी के वाक्यों को, उनकी वाणी को सुनेंगे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है वो महाभागवत हैं और अब वो भागवत बोलना शुरू करेंगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे सुखदेव गोस्वामी पहुंचेंगे और दूसरा जो स्कंद है वहां से हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलना प्रारंभ करेंगे। तो ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई है ताकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, तो आप देखिए भगवान ने एक ही ऐसी अवस्था बना के दो चीजें कर दी। एक तो महाराज परीक्षित को विरक्ति देंगे, अब हम आगे देखेंगे, और साथ ही साथ भागवत का पृष्ठभूमि भी तैयार हो गया है। तो वही हम यहां देख रहे हैं। आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज यही अपने सत्र को विराम देंगे, इस चर्चा को अब अगले सत्र में आगे बढ़ाएंगे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।